जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ फील्ड डिफेंस एकेडमी। तो आज हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट फेज टू। फेज टू अग्निवीर XY ग्रुप के लिए होता है एंड फेज 1 के बाद फेज 2 होता है। अब फेज 2 में एग्जैक्टली होता क्या है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। फेज 2 इज ऑल अबाउट योर PFT, GD एंड इट्स ऑल अबाउट योर फेज 2 जिसमें आपके अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं। अब अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता क्या है एग्जैक्टली? अडेप्टेबिलिटी टेस्ट इज ऑल अबाउट कि आप किस तरह से अपनी साइकोलॉजिकली अपनी सारी चीजों को, मतलब आपके बिहेवियरल पैटर्न पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपकी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की सिचुएशन दी जाती हैं, उसमें हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट प्लस GD। अब इन दोनों के बारे में हम लोग अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करें दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास हमेशा, दैट इज व्हाट इज, व्हेनेवर समवन आस्क्स यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ का मतलब क्या होता है? हम सब अपने बारे में जानते हैं बट वी आर नॉट एबल टू स्पीक ऑन इट। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें? सो नाउ टुडेज प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर GD। टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज द बेसिक क्वेश्चन। अब उसके लिए 3 कैटेगरीज में हमने अपने आप को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। 3 कैटेगरीज में जिस तरह से डिवाइड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी GD के लिए गए। नाउ GD में ग्रुप डिस्कशन से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने के लिए वी शुड बी एबल टू स्पीक अबाउट आवरसेल्फ फर्स्ट। अब अपने बारे में बोलने के लिए हमें सबसे पहले स्पीकिंग स्किल्स एनहांस करनी होगी। इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू एलैबोरेट ऑन फ्यू टॉपिक्स, जिसमें हम अपने आप को एलैबोरेट कैसे करें और अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंटेबल मैनर में कैसे अपने बारे में बताएं। नाउ देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहले, जब भी हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अब ग्रुप डिस्कशन में व्हेनेवर वी गो टू ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। दैट इज द फर्स्ट मोस्ट पार्ट। अब इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो टुडे सबसे पहले अगर आप ये 4 कैटेगरीज में अपने आप को बोलना सीख लेंगे, that is surely going to help you. Category 1, Category 2, Category 3 and Category 4। 4 कैटेगरीज में मैंने इंट्रोडक्शन को डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट कैटेगरी में हमारा क्या आता है? लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक। कैटेगरी 1 में सबसे पहले वी शुड टेल अबाउट आवरसेल्व्स। अब उससे सबसे पहले बताने के लिए अपने आप को ग्रीटिंग पहले करनी होगी। सबसे पहले हम अपनी ग्रीटिंग्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज thank you and then you start with your introduction. Now if we come to the greeting part, what is greeting? Whenever we have to introduce ourselves, first of all we start with greetings. Now good, see, it has been divided into 3 parts: good morning, good afternoon and good evening. अब टाइम के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को ग्रीट कर दिया सामने वाले पर्सन को। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? After greeting, never say hi, hello or hey for the interview. अब आप अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं and obviously it is your interview and you don't have to be informal. आप formal ही जाएंगे। तो जब भी हम hi, hello बोलते हैं, it is always considered informal. So whenever you are greeting anyone, greeting में आप good afternoon, good evening और good morning ही बोलेंगे। Now what comes next is, हम लोग एक एरर करते हैं हमेशा, दैट व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, हम माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। माई सेल्फ से हम लोग को स्टार्ट नहीं करना होता है। इट इज ऑलवेज ग्रामेटिकली रॉन्ग। माई सेल्फ सो एंड सो, माई सेल्फ XYZ, हम लोग माई सेल्फ ना बोल के स्टार्ट विद माई नेम इज और आई एम, यहां से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। दैट विल बी द करेक्ट पार्ट, ठीक है। नाउ अब सेकेंड मोस्ट कॉमन एरर, सेकेंड एरर क्या आता है हमारा? सेकेंड एरर हमारा ये आता है, व्हेनेवर वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ,
सबसे पहला पॉइंट, डोंट से हे हाय हेलो, ठीक, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताया. नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू से. अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, माई नेम इज, वी विल नेवर यूज दीज टू वर्ड्स. ये दो वर्ड्स हम लोग कभी नहीं यूज करेंगे, दैट इज मिस्टर और मिस. We never use these two words, Mr. or Miss, for introducing ourselves. For example, I will never say my name is Miss Aksa Hassan. My name is Miss so and so. I will always say my name is Aksa Hassan. Miss and Mr. ये हम लोग अपने लिए एड्रेस नहीं करेंगे. This is the basic rule of introducing yourself. Now, ये हो गया हमारा पहला एरर जो हम करते हैं. नेक्स्ट एरर, माई सेल्फ से कभी नहीं स्टार्ट करना है. वी विल नेवर स्टार्ट विद माई सेल्फ. माई सेल्फ से हमें स्टार्ट नहीं करना है. माई सेल्फ सो एंड सो, वी विल ऑलवेज से माई नेम इज और आई एम. बहुत से लोग माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड रॉन्ग. ऑलराइट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब ये हमने ग्रीट कर दिया, नाउ वी आर हियर. अब सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और इफ यू आर नॉट एबल टू से दिस, दूसरा पॉइंट आप ये भी बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आफ्टर greeting what you will do is you will use this sentence as thank you for this opportunity or thank you for giving me this opportunity to introduce myself. ये आपका कैटेगरी 1 में आ जाता है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, now never say, whenever you are trying to say, again हम लोग उसी पॉइंट पे आते हैं, फुल नेम. फुल नेम अपना बताना होता है, my name is so and so, पूरे नाम के साथ बताना होता है. never say myself, पहला पॉइंट मैंने कि आपको डिस्कस किया था, you will never say myself. next point, never say I am or Mr. or Miss, you will never say this. now the third most thing is where do you belong to. Now, अब आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, my name is. After this, you have to tell from where do you belong. Now, अब मैं आपको ये जो इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, this is not only for GD of phase 2. ये सिर्फ phase 2 के लिए नहीं होता है. This introduction goes for everywhere. इस इंट्रोडक्शन को आप हमेशा यूज कर सकते हैं. Now, why? अब सेकेंड मोस्ट चीज है हमारी यहाँ पे आती है, that is where do you belong to. अब अपना अपना नाम बताया, my name is so and so, I belong to. I belong to, अब कहाँ के रहने वाले. I belong to को हम लोग किस और तरीके से बोल सकते हैं. How can we use I belong to? Now, I belong to is very old fashioned. ये बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है. Now, what else you will do? After using this, I belong to, इसको हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं. I hail from. See, what you have to do is you have to be presentable. ठीक है, अपने आप को प्रेजेंट करना है एक प्रेजेंटेबल मैनर में. So stop using the old and traditional way of introducing yourself. अपने आप को ओल्ड एंड ट्रेडिशनल वे में ना इंट्रोड्यूस करके यूज न्यू वर्ड्स. ठीक है, न्यू वर्ड्स क्या होते हैं, न्यू तरीके क्या होते हैं बोलने के. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू से आई बिलोंग टू. आई बिलोंग टू मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं. आई बिलोंग टू लखनऊ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ. ठीक है, नाउ स्टॉप यूजिंग आई बिलोंग टू, स्टार्ट यूजिंग आई हेल फ्रॉम. I hail from is a new thing that you need to add on to your introduction. I hail from से आप बोलेंगे, that would be considered much better. ठीक है, so I hail from Uttar Pradesh or I hail from Lucknow, whatever you need to say. Now, next thing is, ये हमारा कैटेगरी 1 में आ गया. Your name, first of all हमने कैटेगरी 1 में डिवाइड किया था. कैटेगरी 1 में आपके आते हैं योर इंट्रोडक्शन, जिसमें आपके फुल नेम, योर वेयर डू यू बिलोंग टू एंड ग्रीटिंग. ये 3 पार्ट आपके कैटेगरी 1 में आते हैं जो हमने कवर कर लिए. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस, व्हाट यू हैव टू से. कैटेगरी 2. कैटेगरी 2 contains 2 points, that is your qualification and currently what you are
परस्यूइंग, मतलब आप अकेडमिकली क्या कर रहे हैं। नाउ अब इसको बोलने का क्या तरीका होता है, सी ये जो मैं आपको बता रही हूँ जितने भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दिस इज नॉट ओनली फॉर जीडी, ये सिर्फ फेज 2 के जीडी के लिए नहीं है, इट अप्लाइज टू एवरीवेयर। आप जहां जहां जाएंगे यू हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां कहीं कोई हमसे बोलता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हमें अपने बारे में पता होता है, वी नो आवरसेल्व्स क्लियरली, बट वी आर नॉट एबल टू डिलीवर इट, हम उस चीज को प्रॉपरली तरीके से बता नहीं पाते हैं। अब उसको बताने के भी तरीके होते हैं, दैट अप्लाइज टू ऑल, ये हम हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। अपना इंट्रोडक्शन, ये जो आज मैं बता रही हूँ, दिस इज द वे यू हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाउ कैटेगरी 2 में क्वालिफिकेशन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न दीज वे। नाउ क्वालिफिकेशन एंड करेंटली परस्यूइंग को अगर हम बताएं तो नेक्स्ट चीजों में वट एवर यू आर परस्यूइंग, अभी आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन होती है वो आप हमेशा बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन किया, इफ आई एम, यू कैन से आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी, तो आप हमेशा अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन बताते हैं। Whenever you are telling about your qualification, आप अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन जो आपने लास्ट में अभी किया है वो आप बताते हैं। नेक्स्ट थिंग इज जो आप अभी कर रहे हैं, करेंटली व्हाट यू आर परस्यूइंग। फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन, यू आर गोइंग फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन एंड आपने एक ब्रेक ले रखा है, सो यू कैन से दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई डिफेंस एग्जामिनेशन और माई डिफेंस एग्जाम्स। आप उसमें आपने एक साल का ब्रेक ले रखा है, लास्ट क्वालिफिकेशन के बाद आपने एक ईयर का गैप लिया एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर डिफेंस एग्जामिनेशन, तो आप उसको इसी तरह से फ्रीली आप बोल सकते हैं what you are currently doing. Currently, as of now, you are preparing for your defense exam, so you can say I am preparing for my defense examination or defense services. I am preparing for defense services or defense examination. ये आपने currently जो आप pursue कर रहे हैं, qualification में अपनी last qualification बतानी होती है and जो आप अभी परस्यू कर रहे हैं वो बताना होता है। सो दीज थिंग्स आर फॉर योर क्वालिफिकेशन। नाउ व्हाट नेक्स्ट आफ्टर क्वालिफिकेशन। अब आफ्टर क्वालिफिकेशन हमने कुछ चीजें और इसमें देखिए, कैटेगरी 3। नाउ कैटेगरी 3 में हमारा जो कंसिडरेशन होता है वो जनरली होता है कि व्हाट आर यू एबल ऑफ, आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, व्हाट आर यू एबल टू डू, आपकी क्या क्या स्किल्स आती हैं, वो हमेशा हम लोग कैटेगरी 3 में करते हैं। नाउ कैटेगरी 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, दैट इज सबसे पहले हम लोग किस चीज में प्रोफिशिएंट है, प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी, योर स्किल्स and or your hobbies। अब तक हमने 3 कैटेगरी पढ़ा, उन तीनों में हमने ये 2 कैटेगरी पढ़े हैं अभी तक। कैटेगरी 1 में आप एक फर्स्ट हाफ में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, इन विच यू विल टेल अबाउट योर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ग्रीट देम, अपने आप को दूसरों को ग्रीट करना होता है। इन द नेक्स्ट यू हैव टू टेल योर फुल नेम एंड फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी यू हैव टू टेल व्हाट आर, वेयर डू यू बिलोंग टू। और बिलोंग टू बताने के लिए मैंने एक आपको नई चीज बताई है, दैट इज यू कैन यूज आई हेल फ्रॉम एंड नॉट यूज आई बिलोंग टू। दिस इज द न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पीकिंग वेल एंड इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू द पब्लिक। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्वालिफिकेशन के बाद थर्ड कैटेगरी में व्हाट आर यू प्रोफिशिएंट ऑफ, आप किस चीज में प्रोफिशिएंट हैं। अब प्रोफिशिएंसी बताने के लिए वी कैन यूज दिस। नाउ प्रोफिशिएंसी होती है कि आप किस चीज में परफेक्ट हैं। Whenever you are telling about yourself, तो आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट होता है कि you always have something good about, ना, आपके पास हमेशा कुछ होता है कि हाँ I am perfect at this thing। सबसे पहले अपनी प्रोफिशिएंसी बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रोफिशिएंट, मतलब आप परफेक्ट हैं किस चीज में, आई एम प्रोफिशिएंट एट स्विमिंग, यू कैन से आई एम प्रोफिशिएंट एट राइटिंग,
आई एम प्रोफिशिएंट एट लर्निंग न्यू थिंग्स। तो आप इस तरह से अपनी एक बेसिक चीज जो आपकी प्रोफिशिएंसी है, आपकी जो आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक अच्छी चीज है, वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज व्हाट आर यू गुड एट। ये तो हो गया, स्किल्स आपके अंदर क्या क्या है। नहीं, द नेक्स्ट थिंग इज हॉबीज। अब हॉबीज को बताने का क्या तरीका होता है, व्हाट इज योर हॉबी। हॉबी इज ऑलवेज व्हाट यू लव टू डू। ओके, जिस चीज को आपको करने में अच्छा लगता है और मजा आती है, पास टाइम में आप करते हैं। नाउ हाउ डू यू से दैट माय हॉबीज आर सो एंड सो। आप जनरली whenever we were kid we were explained that we can say I love dancing, I love singing, I love music. So ये आपकी हॉबीज होती हैं। अब इसको बोलने का एक नया तरीका क्या है। There is a phrase I'll just write on. So now there's a phrase called I am into. I am into, इस phrase का मतलब होता है what you love to do. Now whenever we have to tell that I love dancing or my hobbies are singing and writing, reading, तो अपनी hobbies को इस तरह ना बोल के हम लोग बोल सकते हैं I am into. I am into का मतलब होता है what you love doing. What you love doing, क्या आपको करना पसंद है। So जहां आप अपनी हॉबीज बताते हैं, यू कैन से आई एम इनटू। एंड व्हाई डू यूज आई एम इनटू। अब आपका एक क्वेश्चन ये होगा, व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स हम लोग आई एम इनटू क्यों यूज करते हैं। आई एम इनटू इज अ न्यू वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, आई एम इनटू से हम लोग एक न्यू वे स्पीकिंग का ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस, अब जैसे कि आपको पसंद है सिंगिंग, आई एम इनटू सिंगिंग। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यहाँ पे यूज करेंगे। नेवर यू आई एम इनटू स्विमिंग। जो भी वर्ब होता है उसका ing फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। whenever we use this phrase, so please keep this in your mind कि हम इस अगर फ्रेज को यूज कर रहे हैं तो इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करेंगे। डोंट से आई एम इनटू स्विम, आई एम इनटू रीड, आई एम इनटू, क्योंकि दैट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। जब भी हमें ये बताना होगा देन वील ऑलवेज यूज वर्ब का ing फॉर्म, दैट इज आई एम इनटू स्विमिंग, आई एम इनटू रीडिंग, आई एम इनटू डांसिंग, whatever form of verb you are using, उसका ing फॉर्म हमें यूज करना होगा। आई एम इनटू प्लेइंग फुटबॉल, आई एम इनटू प्लेइंग बास्केटबॉल। सो जितना भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं, we'll always use the ing form with this phrase. ये हो गया, this is the way how we tell about our hobbies. ठीक है, now I'll just come to a summary. मैं एक summary पे आती हूँ। ओके, अब एक छोटी सी समरी। अब तक जो हमने सीखा 3 पार्ट्स में, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाउ व्हेनेवर वी गो फॉर जीडी, बिफोर जीडी इट्स मैंडेटरी टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। ये फेज 2 में भी होता है एंड आई एम टॉकिंग फॉर एवरीवेयर। अब फेज 2 के लिए जब भी आप अपनी जीडी में जाएं, जीडी से पहले यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड दैट इज वेरी नेसेसरी। अब इंट्रोडक्शन में आप किस तरह से हमने लर्न किया, उसके 3 पार्ट्स में हमने आज डिवाइड किया है। Fourth part I'm going to tell you, but before that I'll be discussing with the all 3 categories which I have explained right now. Now number 1 is, first of all you will do the greeting part. Greeting part is always wherever you will go for good morning, good afternoon or good evening. वो आप टाइम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है, the next thing is your thank you note. अब after greeting you have to say thank you for giving me this opportunity to introduce myself. अब ये चीज आप बोल सकते हैं। नाउ इफ अगर आपको ये बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है
तो आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। दो सेंटेंसेस को दोनों में से कोई एक भी बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, या आप ये भी बोल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर ग्रीटिंग, दो चीज हो गई है। नंबर 1 ग्रीटिंग हो गया है, सेकेंड पॉइंट थैंक यू हो गया है, थर्ड पॉइंट इज नेम। नाउ मैंने आपको 3 एरर्स बताई थी दैट पीपल जनरली डू। ये हम जरूरी नहीं है सब करते हैं, बट मेनी पीपल जनरली डू दिस मिस्टेक, हाउ टू से योर नेम व्हाइल यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाइल गिविंग योर इंट्रोडक्शन ऑलवेज बिगिन विद I am or my name is, my name is, never say myself। हम लोग को myself नहीं यूज करना है कभी भी, just take it out of your mind। I have heard many people saying this, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं myself so and so, myself so and so, वो चीज गलत थी। never use myself for introducing yourself। next thing is मैंने दूसरी एरर बताई थी, never use मिस्टर और मिस। अपने आप को फर्स्ट पर्सन में एड्रेस करने के लिए वी नेवर यूज मिस्टर और मिस, वी ऑलवेज यूज आई एम, जस्ट डायरेक्टली से योर नेम। अगर आप किसी और के लिए यूज कर रहे हैं देन यू कैन से मिस्टर और मिस, नेवर से आई एम। लाइक फॉर आई गो फॉर जीडी, तो मैं ये नहीं बोलूंगी माई नेम इज मिस अक्सा हसन, आई विल नेवर से दिस, मैं डायरेक्टली अपना नाम बोलूंगी। सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स विच वी डू। तो ये हो गया आपका नेम का, विच आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आई बिलोंग टू। आई बिलोंग टू, सबसे पहले आपने ये दोनों चीजें तो बता दी कि आपका नाम क्या है, ग्रीटिंग्स कर दी। नाउ आप कहाँ के हैं वो बताना होता है अपने इंट्रोडक्शन में। वेयर डू यू बिलोंग टू? बिलोंग इज जनरली यूज्ड व्हेनेवर यू हैव टू टेल कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ का है और आप कहाँ के हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो मैं यूज करूंगी आई बिलोंग टू लखनऊ। नाउ दिस इज नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है, दिस इज राइट, बट नाउ वी स्टार्ट यूजिंग बिलोंग टू की जगह स्टार्ट यूजिंग आई हेल फ्रॉम, HAIL, आई हेल फ्रॉम, मतलब कि आप कहाँ के रहने वाले, आई हेल फ्रॉम। दिस इज द न्यू वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, ये नया तरीका है एंड विच यू मस्ट एड ऑन। ठीक है, आई हेल फ्रॉम सो एंड सो। अब फॉर एग्जाम्पल द इंटरव्यू इज कंडक्टेड टू द प्लेस वेयर यू आर बोर्न इन, जहां पे आप हैं, आप वहीं के हैं और वहीं पे उसी सिटी में इंटरव्यू भी कंडक्ट हो रहा है। देन यू कैन से itself, I'll just tell you one more thing। ठीक है, बहुत से लोग ये बोलते हैं I belong to, for example, I belong to Lucknow itself, Lucknow itself। Second point, I belong to, for example, Varanasi itself। अब ये itself हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? Why do we use this itself? बहुत से लोग itself बोल देते हैं। Now इसका रीजन ये है कि itself हम तभी बोलेंगे when the interview where it has been conducted, जहां ये इंटरव्यू हो रहा है वो आपकी ही बर्थ प्लेस पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू लखनऊ, मैं लखनऊ की हूँ एंड द इंटरव्यू इज बीइंग कंडक्टेड इन लखनऊ इटसेल्फ, तब हम इटसेल्फ बोलेंगे। बहुत से लोग इटसेल्फ में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे से आई बिलोंग टू सो एंड सो इटसेल्फ। इटसेल्फ सिर्फ उसी जगह के लिए यूज होगा वेयर डू यू बिलोंग और जहां पे ये इंटरव्यू हो रहा है। तो नेवर यूज इटसेल्फ रैंडमली, ठीक है। और इसको बोलने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रेजेंटेशन, स्टॉप यूजिंग द वर्ड बिलोंग टू एंड स्टार्ट यूजिंग आई हेल फ्रॉम। आई हेल फ्रॉम इज द बेटर वर्जन ऑफ saying this. Now the next thing is your category 2, that is qualification and currently pursuing. Category 2 में आपका आता है your qualification and what you are currently pursuing. Qualification को बताने का तरीका होता है always just use
द लास्ट क्वालिफिकेशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लास्ट क्वालिफिकेशन, जो आपने लास्ट में किया है वो बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका लास्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, so you'll always say graduation. For example, your last qualification is intermediate. 12th के बाद you have started preparing for your defense examination. So you'll always say I have completed my intermediate from so and so board. इस तरह से आप बोल सकते हैं. Now next thing is currently pursuing. अभी आप क्या कर रहे हैं? Now comes कि अब क्या कर रहे हैं, वो तो आपने पुराना किया था. अभी आप क्या कर रहे हैं academically? Academically, what you're currently pursuing is you are preparing for your defense examination or defense services. You are preparing for defense services. तो आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं that currently I am pursuing for defense services or defense examination. ठीक है, ये हमारा currently जो pursuing होता है वो हम category 2 में बताते हैं. Now category 3. Now we are coming to category 3. अब category 3 में हम क्या करते हैं? category 3 में we always tell about what you are proficient of, what are your skills and what are your hobbies. Hobbies and proficiency में please don't get confused. Please don't get confused. यहाँ पे proficiency होती है what you are perfect at. Proficient का मतलब भी होता है जो मैं perfectly कर सकता हूँ. Okay. Now, चलिए अब proficient में for example you are perfect at writing. You are perfect at writing. So you can use that I am proficient in writing or I am proficient in reading. जो भी जिस भी चीज में you are perfect at, it's very important. Now I am telling you it is very important. जब भी हम आपको इस पॉइंट के लिए बता रहे हैं proficiency, this is very important to tell while giving your introduction. Whenever you are telling about your personality, you need to introduce yourself as a person who is capable of doing everything. ठीक है, जो इंसान अपने बारे में पॉजिटिव चीजें बताता है वो इसी तरह से बता सकता है. Whenever you try to introduce yourself, introduction is the main part. जहां आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया, आपका प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अच्छे से हो जाता है. So it's always important to tell your proficiency. किस चीज में आप परफेक्ट हैं. You're perfect at writing, you're perfect at reading. वो आप थर्ड पार्ट में, थर्ड कैटेगरी में बताते हैं. Now, next thing is skills. Skills में आपकी skills क्या है, मतलब कि आप किस चीज को अच्छे से कर सकते हैं. For example, you are skilled for कोई भी एक्स्ट्रा आपने कुछ कोर्सेज कर रखे हैं स्किल्स में. For example, swimming course or any other kind of course, वो आप skills में अपने add on कर सकते हैं. Next thing is hobbies. Hobbies मतलब what you enjoy doing most in your free time. जो आप करने में आपको अच्छा लगता है अपने free time. तो उसको भी बोलने का एक तरीका होता है. How it is done. Number 1, hobbies. For hobbies, there is a phrase which I have already told you. I am into. I am into. I am into का मतलब क्या होता है? I am into is the Now, I am into is a phrase which is used only for the things which you are good at. मतलब जो आपको hobbies हैं जो आपकी, उसके लिए my hobbies are swimming, my hobbies are dancing, my hobbies are singing. तो उन चीजों को बोलने के लिए आप किस तरह से यूज कर सकते हैं? The word is I am into. This is used for hobbies. अपनी हॉबीज को बताने के लिए. ये मैंने आपको एक समरी फॉर्म में, जिस्ट फॉर्म में बता दिया है. द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ इज, अब तक जो 3 पॉइंट्स थे वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं हमारे. दैट आई एम इनटू इज यूज्ड फॉर हॉबीज. अब हॉबीज को बताने का तरीका ये होता है दैट व्हेनेवर यू आर टेलिंग योर हॉबीज, ऑलवेज यूज द ing form of verb. We can always say I am into dancing, I am into singing, I am into playing basketball, I am into playing
hockey. So these are the verbs. Verbs are always used in ing form with this phrase. इस phrase के साथ हमेशा हम ing form ही use करेंगे while telling your hobbies. Okay. These are the three categories in which you can describe yourself. Now, the third thing is after your proficiency, your personality. अब अपनी बारे में आप कुछ ऐसे points बताएंगे which you are good at. For example, I'll just use a few adjectives. कुछ ऐसे adjectives अपने लिए आप बना लीजिए that you can say while you're introducing yourself. For example, मैंने दो यहाँ पे I've just used two adjectives over here. That is, one is hardworking and the other one is goal oriented. Just tell two qualities about yourself while introducing yourself. अपने आप को बताने, अपने बारे में बताने के लिए दो qualities अपनी use करिए आप. Number one, hardworking or goal oriented or any other thing. अगर आप इससे apart from this you are using any other thing also, then you just have to tell one quality. अपने बारे में quality आपको बतानी होती है. That is your personality type. मैंने दो points लिखे हैं, hard working, goal oriented और self motivated. One more I can say, self motivated is a quality. I am a self motivated person. Now these are the 3 points, still three categories we can discuss till about our personality. Now after personality, what comes next? अब जैसे कि आपने अपनी हॉबीज बता दी, नाउ प्रोफिशिएंसी, हॉबीज, पर्सनालिटी में देयर आर मेनी एडजेक्टिव्स व्हिच यू कैन यूज. अपनी एडजेक्टिव्स आप बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं. आप किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ फिटनेस फ्रीक. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज अ फिटनेस फ्रीक. वो अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देता है. सो यू कैन यूज फिटनेस फ्रीक. The other adjective is fitness freak. Okay. Now, so for this, you just have to tell what kind of personality you are. Up in 3 categories में, now in these 3 categories, we have already described ourselves. This was a brief introduction. जो हमने एक अच्छे से अपने आप को introduce कर दिया है. This was a brief introduction. Now coming to category 4. Now we have covered 3 categories. In these 3 categories we have already told about your personality. Now coming to the 4th category. इन चारों categories में मैंने पूरी पर अपने introduction को divide किया in the manner in which you can portray yourself for your group discussion. Okay. Now category 4 comes accomplishments and achievements. दोनों एक ही चीज है. Accomplishments are the extra things which you have achieved. आप अपनी extra जो आपके certifications हैं वो सारी चीजें आप अपने category 4 में lined up कर सकते हैं. Yes, Atul Kumar has said, I am perfect reading. I am perfect at reading. You can say I am perfect at reading. ठीक है. So Atul, yes, you're right. I am perfect at reading आप यूज कर सकते हैं. तो आप इसको I am into reading के लिए यूज कर सकते हैं. I can see a comment यहाँ पे अतुल कुमार ने बोला I am perfect at reading. तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं I am into reading. I am into reading. This is the thing which you can add on. I am into reading. I am perfect at reading. Then you can say I am into reading. All right. Okay. Now let's come to the another part. Okay. Maybe now I am maybe everyone. Okay. So is it clear with everyone? Okay. Now we shall move on to the next category, that is category 4. Category 4 में हमारे क्या points आते हैं? Accomplishments, achievement. Accomplishments are always tell about the extra curricular activities जिसकी वजह से आपको कुछ certifications मिले हैं, आपके क्या achievements हैं.
दैट इज द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अपने अचीवमेंट्स बताइए. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अचीव्ड इंटरस्टेट खो खो और हॉकी सर्टिफिकेट. ठीक है, तो किसी भी चीज में जो आपके एक्स्ट्रा आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो आप अपने अचीवमेंट्स में ऐड ऑन करें. दिस इज योर कंप्लीट इंट्रोडक्शन. ओके, नाउ कमिंग टू अचीवमेंट्स, वही आपके अकम्प्लिशमेंट्स हो गए, वही आपके अचीवमेंट्स हो गए. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Okay, now there is a point where you are asked about your strength. What is my strength and what is my weakness? Now, wherever you go, there is very important to tell about your complete personality. आप अपनी complete personality के बारे में बताते हैं. तो उसमें एक first point जो कि मैंने अपनी PPT में presentation में include नहीं किया, but I am going to tell you is talk about your strength. Talk about your strength. What is your strength? आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? What is your strength? Now, many of you will say, my strength is that I am a hard-working person. I am a hard-working person. Next thing is, now quickly, you all can comment. आप लोग comment कर सकते हैं यहाँ पे. That what are your strengths, so that I may be able to explain you properly. Now I want everyone to tell about your qualities, जो आपकी strength है. Just quickly write in the comment section so that I can brief you further about it. अब अपनी strength को आपको किस तरह से बताना है, because that is a plus point. ये आपका एक plus point होता है अपनी personality के लिए. This is a plus point which you need to add. Now quickly tell about your plus points, that is your strength. How will you tell about your strength? Quickly write down in the comment section. अगर आप comment section में बताएंगे, then I'll brief you further कि आप किस तरह से अपने बारे में बता सकते हैं. Now, for example, I have written hard working. Next is I am self-motivated. I'm a self-motivated person. Or you can write down anything else, what like I am skillful person, or you can say I am a jolly or amiable person. आपकी strength क्या है? That you are a amiable person. Amiable मतलब जो खुश रहता है हमेशा, who is always happy. So ये कुछ कुछ आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ होती है. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये हो गई आपकी स्ट्रेंथ का, दैट इज योर फिफ्थ पॉइंट. ऑलवेज टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ. आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, और आई एम गुड एट, और आई एम अ एमिएबल पर्सन, आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. तो these are the basic things how you can introduce yourself. Now coming to the sixth point is okay. Now in many interviews or anywhere you go, people always ask, what is your weakness? Now this is a big question. This is a big question. How will you tell about your weakness? अब आप किसी के सामने अपनी weakness कैसे बता सकते हैं? And see, we all have weakness. हम सबके पास एक weakness होती है, and it is very wrong to say. अगर आप interview में बोलें that no, I don't have any weakness. Okay, so okay, Atul Kumar has again gave us a comment that I am good at speaking. Okay,
I'm good at speaking. So this is your accomplishment which you can, this is your strength which you can add. ये आप अपनी strength में add कर सकते हैं. तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं that I have a good communication skill. I have a good communication skill. So this can be your strength. Just a minute. Now you can use I have a good communication skill. That is your strength. So whenever you talk about your strength, आप अपने बारे में जो positive points है वो आप deliver करते हैं. So this is the main way how you can say about your strength. Now coming back again to the weakness part. How will you tell about your weakness? That's a big question. How will you tell about your weakness? अब weakness के बारे में बताने के लिए हमें क्या करना होता है? That you always have to say it, but you have to tell a measure how you are correcting it, how you are reducing it. अब आप इसको किस तरह से खत्म कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? For example, this is I'll just talk about one weakness. The weakness is I am not good at reading. For example, I am not good at reading. Everyone will tell this. Now believe me, if you at the interview, if you say that I have no weakness, then it would be wrong, because we all have a weakness. हम सबके पास weakness होती है, and then now it is how we have to correct it. In our personality trait, how we are going to introduce it is I am not good at reading. Now reading के लिए what you are doing, आप उस चीज को सही करने के लिए क्या कर रहे हैं, that you have to say along with your weakness. इस point पे whenever you are telling about your weakness, along with that weakness, you have to tell how you are going to correct it. For example, I am working on it. Simply just add on I am working on it. जब भी आप अपनी किसी weakness के बारे में बताएं, just say I am working on it. I am working on it. And how are you working on it? आपसे अगर ये चीज पूछ ले how you are working on it, आप वो किस तरह से rectify कर रहे हैं, then you can say, number one, I have started reading novels. I've started reading novels, newspapers, magazines, or I have started listening to podcasts. Now, believe me, that it's a very good method. It's a very good method. I'm just talking apart from this presentation that it's a very good method to start listening to podcasts. Now, start listening English podcasts. That will be helpful to you. ये आपको एक help करेंगे so that you can increase your speaking skills and your reading skills. Okay, so the gist point is that whenever you are trying to tell about your weakness, just go on with one more add-on thing, that is always say I'm working on it. It is a way of telling about your weakness. Now believe me, if you will say I have no weakness, then it would be considered wrong. वो चीज फिर गलत होगी. So it's always important that whenever you are telling about your weakness, start it with how you are working upon it. How are you reducing it? आप उसको correct कैसे कर रहे हैं? So these are the things which have to be considered in your introduction. All right. Okay, now it is written wrong. I have a good combination skill नहीं होगा. I have a good communication skill होगा.
Okay, my hobbies is cricket. My hobbies is not cricket. It will be like my hobbies is playing cricket. अब इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, अतुल कुमार ने टाइप किया my hobbies is cricket, नहीं, I am into playing cricket. I am into playing cricket or I am into cricket. I am into cricket is you love playing cricket. So just you can reuse this phrase, rephrase this word, that is I am into cricket is a way of telling your hobbies. Okay, अपनी हॉबी को बताने का एक ये तरीका है. अतुल, you can use it. I am into cricket. That means you love playing cricket. All right. Okay. I am into volleyball. Yes. One more person has said I am into volleyball. So yes, that one is correct. Perfectly fine. My hobbies are की जगह start using this phrase, and I'm glad that you all have started using these phrases. Now, I am into volleyball is the correct way of saying what you love most. Now, I have covered 4 points that I'm going to write down. Is number 1, now I'll come to the ending part, that is so now in my presentation today for the group discussion, whenever you will go for your group discussion for your Agniveer XY group, उसमें 2 चीजें होती हैं. One is your group discussion, second is your psychological test. ठीक है. Now for group discussion, before group discussion, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, and for that introduction I have given you 4 categories how you will introduce yourself. Now coming to the gist, to the summary of all the points which I have covered in this presentation is number one, you will start with greeting. सबसे पहले हम लोग किससे start करते हैं? Greeting से. Greetings, and that goes for everywhere as well. आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी introduction में, whenever you will go for your introduction, you have to tell these points in these 4 categories. This is the elaborated form of telling about your personality. Okay, now number 1 is greeting. Number 2 is what you will say after greeting. After greeting, you will give a thank you note. Just remember, इस चीज से इसको याद रखिए. Just remember, thank you आपको करना है. You always have to say this, that thank you for giving me this opportunity, or thank you for giving me the opportunity to introduce myself. मुझे ये opportunity देने के लिए thank you. Okay. Now, what is the third point which you are going to include is start with your name. Name के लिए I have always told you, never start with myself. That would be wrong. Don't start with myself. Myself गलत होता है तरीका कहने का. Now you'll all, and the second point is never use I am Mr. or I am Miss. Just say directly your name, your full name. All right. The fourth point is after name. After name is place. Where do you belong to? Where do you belong to? Now the way of saying your place is I hail from. Stop using I belong to. आज से इस चीज को बंद कर दीजिए. Stop using the word I belong to. Start using I hail from. I hail from. आप कहाँ के रहने वाले हैं? I hail from, not I belong to. I belong to is not wrong. See, I belong to is not wrong. वो गलत नहीं होता है. But now you have to start using, or you have to start communicating well. अपने आप को अपनी communication हमें और enhance करनी है. You have to start using the new methods. तो उसके लिए we'll start using. You will have to forget the older version. ये जो पुरानी चीजें उसको दिमाग से निकाल के start using the new ways of speaking. I hail from, not I am into, or not I belong to. I hail from. Okay. Now the fifth point which we'll cover after this is your personality. आपकी क्या personality है? Describe your personality.
I am a hard working, or I'm a hard working person, I'm a self motivated person, I'm a punctual person. So these are the qualities, these are your personal traits, personality traits, which you can use to introduce yourself. Okay, now then, all right, now the next one is your qualification. Okay, now what for your qualification, I have already told you, you will say what you are currently pursuing and what you have completed. आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, आप अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन बताते हैं, एंड करेंटली आप अभी क्या कर रहे हैं, what you are pursuing. Pursuing, just note down the word pursuing. Pursuing मतलब कि जो काम आप अभी कर रहे हैं. Currently what you are pursuing. Currently I am pursuing my preparations for defense examination. अभी मैं pursue कर रही हूँ अपनी preparation. ठीक है? So these are the things which you can say. Now after this, the last thing, second last I can say, the seventh point which needs to be covered in your introduction is, seventh point, just tell about your hobbies. Okay, now what is the way of telling your hobbies? I have already told you, start using the word phrase I am into. Not, don't say I like doing this, I like doing that, I love playing basketball, I love playing singing, I love doing singing. This is wrong. Just say I am into. Hobbies को बताने का तरीका ही यही होता है. Start using I am into. All right. Now, okay. Now the next one is about your hobbies. Now the eighth point is your strength. अपनी स्ट्रेंथ, आपसे सबसे बड़ी ताकत आपकी क्या है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ. मैं अपनी फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ बताने के लिए नहीं कह रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू टेल सम गुड पॉइंट्स, अ प्लस पॉइंट, योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग. नाउ यू कैन से दैट आई हैव अ क्वेस्ट ऑफ लर्निंग. मैं चीजें जानना चाहता हूँ. आई हैव अ क्वेस्ट ऑफ लर्निंग. तो आप इस तरह से बोल सकते हैं. Now you can say I am a motivated person, or you can say I am good at learning things. आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मैं चीजों को जल्दी सीख लेता हूँ. I am good at learning things. So these are the points. The ninth point which I have given you is talk about your weakness. Weakness is the point. Don't say about this weakness whenever you're not asked for. Whenever आपसे पूछा जाए अगर what is your weakness, only then you have to comment on this. Unless and until anyone is not asking you what is your weakness, don't say it randomly. Okay, अगर कोई पूछे then आपको बोलना है. All right. Now the correct way of telling your weakness is use a word that is I am working on it. I am working on it. Now, how are you working on it? See, it is very important. If you will say that I don't have any weakness to the interviewer, अगर आप interviewer से ये बोलते हैं, no, I don't have any weakness, then it might be considered wrong. So it's very important if the other person is asking you, interviewer is asking you, what is your weakness? Then you can say that yes, I have so and so weakness and I am working on it. मैं उस चीज पे काम कर रहा हूँ. मतलब I am correcting it. मैं उस चीज को सही कर रहा हूँ. ठीक है? Okay, the question is when to tell about parents. All right. अगर आपको ये चीज add on करनी है, see, it is not an important part. लेकिन अगर आपको ये चीज add on करनी है, if you want to say things about your family, personal introduction is always personal introduction. आप अपनी personality के बारे में बात करते हैं. Now, if you want to introduce something about your parents, then आप hobbies से पहले हॉबीज से पहले अपनी पर्सनल पेरेंट्स के बारे में ऐड ऑन कर सकते हैं. व्हेनेवर आप अपनी हॉबीज पे आते हैं,
हॉबीज से पहले आप अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेनेवर यू आर टेलिंग अबाउट योर पेरेंट्स, डोंट से द होल हिस्ट्री. Nobody is here to listen your whole history. Just tell how many people are there in your family. There, for example, there are 3 people. So just say there are 3 people in my family, my parents and including me. That's it. Now, for your family, don't start the full introduction. पूरा introduction नहीं start करना है. Just say how many people are there in your family, and if the interviewer asks or suggests any more further questions about it, then you have to tell. अगर आप आपके जितने भी आपके siblings हैं, अगर आप siblings बता रहे हैं, then you can just say the random number, जितने number of siblings हैं, बस वो बताना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है. Okay? So these things are included for your introduction. Now, these things are included for your introduction. How to introduce yourself. Now, this class was how to introduce yourself. अपने आप को किस तरह से आप introduce कर सकते हैं before the GD, before group discussion. अपने आप को introduction देना, that is the very important thing. Now, if there are any queries, you may ask me in the comment section. अगर इसके further किसी की कोई queries है, you can ask me. All right. Okay, now I guess everyone is clear with all these things. Okay, thank you and Jai Hind to everyone. Okay, now, all right, I wanted to tell you all one more thing, that in the next class, I will be telling you about the pronunciation, the correct way of pronouncing few words which are commonly pronounced wrong. क्योंकि see, when यहाँ पे we are introducing you to the phase 2 of XY group. अब अग्निवीर XY ग्रुप के लिए हम आपको नेक्स्ट फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें कि आपका GD आता है एंड आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट आते हैं. नाउ फॉर GD इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अच्छे से कम्युनिकेशन आए, एंड फॉर कम्युनिकेशन देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच नीड टू बी कवर्ड. तो वो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी. आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू द वर्ड्स व्हिच आर ऑफन प्रोनाउंस्ड रॉन्ग. क्योंकि कम्युनिकेशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द वर्ड्स करेक्टली, प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली एंड इन अ गुड मैनर. ओनली देन इट विल बी portrayed or represented properly. Now, so in the next class, we'll be discussing about pronunciations. Thank you. Jai Hind.